बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सीजे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के जो क्लासेस का हमने आगाज़ किया है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फोरम पर, उस सिलसिले में आज ये 4th लेक्चर है और आज लेक्चर है हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके हवाले से ये लेक्चर है। इसमें हमारे पास प्रोफेसर है कामरान सूफी साहब, इनको हमने बार ने बाकायदा हायर किया है आप मोज़बाद मेहमान को इंग्लिश के हवाले से बाकायदा टीच करने के लिए। इनका ये फर्स्ट लेक्चर है आपके पास। और एक अहम बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ तमाम मेहमान से, टाइम की पंक्चुअलिटी को ज़रा कोशिश करते हैं मिलकर करें कि इसको ज़रा प्लीज़ मेक श्योर करें। आज भी 3:30 बजे का टाइम था, लेकिन अगले होते होते ये 3:50 हो चुके हैं और 5 बजे का मेरा मैसेज है वो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, 5 बजे क्लास वाइंड अप कर देगा। बहुत सारे लोगों ने टाइम आगे दिया होता है। अभी हमारी जो फीमेल बार मेंबर्स हैं, इन्होंने घर जाना होता है, फैमिली मेंबर्स लेने हैं तो एग्जैक्ट 5 बजे क्लास वाइंड अप हो जाएगा। अब ये 20 मिनट जो लगाए हुए हैं वो नेक्स्ट टाइम एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कामरान सूफी साहब से कि वो अपने लेक्चर का आगाज़ करें। थैंक यू। In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, as Sponsor has introduced myself, my name is Kamran. I'm assistant professor at Government Lahore College. I have teaching experience of almost 15 years, and I have taught at different levels, intermediate level, graduation level, English preparation, IELTS, language courses, grammar courses, and so many other courses. So we are going to have preparation classes for competitive English exam. As you know, we are given specific syllabus and we have to follow that syllabus accordingly. We have to prepare. So some of you must be aware of the portions of exams, and there are 4 main portions of studies. First of all, we are going to have the introduction of syllabus. There are 4 main parts, as I told you. The first one is literature. The second one is grammar. The third one is comprehension. And the fourth one is essay. As far as the portions which are specified by High Court on the website, there are these 4 portions mentioned. But if you look practically at the paper, there are so many other things which are included. They are directly or indirectly related to English grammar, sentence structure, or the flowery language. So we have to include the rest of the things along with these portions, and these are translation, pair of words, idioms, and official language. Okay, now we are going to have a specific introduction of each part. As far as literature is concerned, there is no any kind of limitation which is mentioned by the High Court in their website. We know from the past experiences of
previous papers, there are specific writers which are chosen, and from their writing styles, from their views, from their ideology, the portions come in literature. So, in literature, the writers which we will study, Francis Bacon. Francis Bacon is a great name in essay writing, and he was the writer of 16th century. You can see 500 years are gone, and the way he used to write essays, nobody could compete his writing style up till now. He was master of brevity, conciseness, and I would say his writings were full of wisdom. Within one sentence, 3, 4 different aspects are merged together, which were based on practical life experience. So we can say, if each sentence in the essay is quoted, it is a worldly wisdom. It is a kind of proverb, right? So we will study about his writing style and his concepts, the way he presented his concepts in his essay writing. Apart from that, we'll study about Bertrand Russell. And in your last exam, the recent exam, there was a question based on Bertrand Russell. In the previous exams about Francis Bacon questions came, and there was also choice in this exam between the ideology of Huxley. You could write about Huxley or Bertrand Russell. So we'll also know about the philosophical ideas and ideological things of Huxley too. Right, and meanwhile, we'll go through in depth about the writings. So we can choose Charles Lamb. He's also a great name for writing emotional essays. So we will also study about his specific writing in writing essays. And Emerson. Emerson is an American writer. His name is now in the field of philosophy equal to Lahore. The philosophy which is presented by Lahore of self-reliance, the concept of khudi, the same concept actually was given by Emerson in America, and the people just follow in America him in the form of accepting the concepts of self-reliance, independence, freedom, and stuff like that. Okay, so we'll concentrate on these 5 writers. As you know, literature is not limited. When we talk about masters of English language, we are supposed to study around about 35 different writers and their different works. So you are not specifically studying the literature. There is only one question, sometimes of 20 marks, 25 marks, or 30 marks. And mostly these writers who are the essayists, they are the focus for giving the questions. So therefore, we will not study about poetry, we will not study about novel, we will not study about drama. So we will study these 5 writers. Okay. And even we will not study the detail of them, the main points of these writers we will talk about, so that you can make a good outline about each writer and you will be able to write a good comprehensive essay or question in this class. Right, now we are going to talk about grammar. Grammar is multifarious because it covers so many aspects. In grammar, there are actually 2 things. One is morphology. It's all the introduction about your syllabus. We are not studying kind of specific subject or kind of specific knowledgeable things. We are just now having the introduction of all
the syllabus. Okay, morphology is here, and then syntax. These are the technical terms. Morphology is called the scientific study of word. For example, there is a word tantamount. So what is it in grammar? It's adjective. How it is used in a context. We will study about it. The scientific study of word and word formation. What is a word and how the words are formed? Just like if we make a word from adjective, a noun, what will be the process? If we want to make an adjective from a noun, what will be the process? Right? So that you will be mature enough to identify what is the main grammatical category of a certain word. Whether it's a noun, adjective, a verb, conjunction, interjection, and stuff like that. Okay, what is syntax? Syntax is called scientific study of sentence structure. Scientific study of sentence structure. How the words are put together in the phrases, and afterwards the phrases are joined in bigger blocks to make a sentence, right? So you can say scientific study of sentence structure is called syntax. So grammar-wise in both of them. If we know what is a word, just like you have studied in your 6th class on words about parts of speech. But they were just at basic level, simple definition and certain examples. But when we will talk about this morphology, we will also study about the formation process too. And syntax, putting these words in the phrases and then longer structures. And maybe you won't have any experience, but a sentence can be longer, which can cover thousands of words within one sentence. And it could be shortest, which could be just one word. For example, if I say go, that is also a sentence. It's a one word, but even then it's a sentence. But a sentence can be such a longer that thousands of words can be put together in one sentence without breaking any grammatical structure. Okay. So we'll study about morphology and syntax. Why there is a need of doing these things? Because you have to write an essays. Without knowing the sentence structures, you create so many problems. You are not able to manage a complex sentences where 2 or 3 clauses are joined. Even there are problems of connectors. Even there are problems of punctuations. When to use comma, when to use inverted commas. All these things are discussed in the sentence structure. Right. What is grammar? Grammar is basically called rules, set of rules. Grammar is a set of rules to use language correctly. So we come to know about the rules that this word must be before another word and it cannot be followed or preceded by any other. So what word should be placed in a natural requirement of any portion within a sentence? So we will study about those rules. Right. So you can say that grammar will cover morphology and syntax. Afterwards, we have comprehension portion. Okay, what is comprehension? Can anyone tell me the meaning of comprehension? What are the rough ideas in your mind? Anybody? Yes, please. Okay, not audible. Can anybody speak louder? Whatever is that? Summarize. Okay, comprehension is to summarize. But what did you say? Understanding. Okay, understanding. Comprehension basically means understanding. And this is a noun. It is taken from the word comprehend. I want to comprehend what you are saying. I want to comprehend. I want you to understand what you are saying. So comprehension basically understanding. You are given a passage, you are asked to read, and you are reading for message. You receive the message. But how can I know that you have understood the message properly?
reading is a kind of skill which you do by yourself. It is not visible. I'm speaking now in front of you, so I'm visible in front of you. And you know that how I'm speaking, how I'm making the sentences. But when you read with silence, how can I understand that you are reading well and have understood the message well? After reading, you should produce something. Okay? And what you are going to produce, you will produce two things. One is Pressy. Yes, Pressy. Maybe some students can't see over there because of this table. But Pressy, it's a French word which means summarize, whatever you said. So, whatever you have read and understood, you have to summarize the same thing. But it is not just general summary. It is very technical. There could be general summary, but it could not be up to the level of Pressy. Because Pressy is a systematic summary in which we need to know what should be given more importance from this reading passage. And what things could be skipped. Right? So we are allowed to skip so many things. But in summary, all the things can be included. Right? So Pressy is, you can say, technical summary, and we will study about it. And mostly 25 or 30 marks are there in your exams about Pressy. Right. Second type of question from comprehension, there is explanatory questions. Explanatory questions. In summary, what happens? You use the lab. And in explanatory questions, you expand. Whatever you have understood from the reading passage, now you have to add up something. And the examiner is now going to check whether while adding something from yourself you become irrelevant or not. What was the concept? You are just expanding only that thing, or you are just bringing something irrelevant. So we measure these things. So in explanatory things, we have to explain whatever is mentioned in the reading passage in our own words. While explaining, if in the passage only one sentence is there, you should have the ability to write that one sentence in 5 more sentences, without becoming irrelevant. Okay? So that is the thing which we require in explanatory questions. So there you will understand what is the value of sentence, if you are able to make sentences valuable. Okay, the next part, which I told, that is essay. Well, at your level, in your competitive exams, I have seen the past papers in which there are analytical essays. Up to graduation, whatever the essays you write, those essays are descriptive. Those essays are descriptive. But in your competitive exam, there are analytical essays. I have seen sometimes students are asked to write an essay, whatever comes in their mind is come writing, but we are able to judge whether it's a descriptive style or analytical style or argumentative style or critical style. There are different types of styles for writing essays, but what is our requirement? That is analytical essay. Of course, there are more options. 4 or 5 topics are given to you, and you have to choose one about which you have more knowledge. But we need to know that how to write an analytical essay so that we can gain more and more scores. So this is the explanation of this papers. This is introductory class we are having it. This one, right? These things, they are also present in your paper. But what happens in all of them in translation? Basically, it's directly related to grammar and vocabulary. If you have good grammar and you have good vocabulary, you won't have any problem for translating things. Right? Because sometimes it comes in comprehension, the reading passage which is given to you, you are asked to make a Pressy and also translate. If you know the vocabulary items, then you are able to convert in a good style, in good paragraph. But if you have no knowledge of vocabulary, of course there will be problem. But some structures will also help us
especially the complex sentence structures. If we talk about conditional sentence or conditional sentences or operative sentences or imperative sentences, we should know how they should be translated, right? If something written in English and in which type of style that sentence is written, accordingly we have to translate it, right? Okay, so of course that is the part of grammar in which we should know how a sentence is given and what would be our translation. Well, as far as plain words and idioms are concerned, it's a matter of grammar. Because there is nothing from my side to give you any clue for a word or idiom. You must prepare almost 400 or 500 pairs of words and similarly 400 to 500 idioms. Right? And these idioms I have seen in your past papers. They are, I can say that 50% idioms are present which are of graduation level. In graduation, those idioms will be in those sort of idioms are present. 50% idioms are there. And 50% idioms are of advanced level. You can see there are thousands of idioms, even idioms dictionaries are available. But all of them are not a part of graduation. They are in graduation books, similar types of. If you pick up of BA, you will see similar types of idioms are present. And we have observed that in your competitive exams, almost 50% idioms are present, which are none of that level of graduation. Of course, for that, I will provide you certain notes for preparing your idioms. And similarly, official letter is technical and it has a format. At what level we have to address, at what level we have to salute, at what level we have to present our topic or subject, and how to give a start to our official letter. So it will be a technical game in one class course to be handled. What will be the body of that official letter? It will all depend on the topic, which is assigned time. But technically, it will be a matter of just half an hour in which you understand that what portions will be there and what will be the setting of format in which part of the line something will be written. Okay? Right, so this is all about the introduction of our syllabus. And up to now, if there is any question, you are welcome. Hopefully you have understood your syllabus, right? Okay, so what do you think? What do you think? From which part we should start our lessons? Grammar. Yes, this is two questions I've said. Grammar, and of course it is logic, because grammar is the base from which we start from the word, and then we come towards the sentences. These are the advanced stages in which we write essays or we make essays. Right? But if we know of this grammar, how the words are adjusted in the sentences, then rest of the things. Even if you have to use their words in the sentences, so you must know how the sentence is formed. If you want to use official letter, of course sentences will be required. Okay, so our starting point will be grammar. So can I please? I want to raise it. Yes, grammar is very interesting. Though for some people it becomes a kind of headache. But as far as my experience is concerned, it's very, very interesting. If you just pay attention to my lectures, you will understand each and everything. And you have to promise one thing. आपने ग्रामर के बारे में आज तक जो कुछ पढ़ा है उसके ऊपर अप्लाई करें. Because 95% people teach incorrect grammar. And of course, when we come to practical life,
for using language, there are so many problems. तो अगर आपने कहीं भी और इवन के जो पाकिस्तानी राइटर्स की बुक्स हैं वो भी ग्रामेटिकली wrong definitions, so that is a big issue. So you have two prongs if you want to learn grammar. So you have to cross the previous things, and it's not a big game. Within just 30 to 40 for 30 days almost, your complete grammar structure will be built. You are mature, right? You're not just typing that I can teach. So it's like a spoon feeding. आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन परेशानी आगे अगर पुरानी चीजें भूले तो बाकी कहाँ से करूँगा? You have to just be determined for only and only almost 1 month, and you will be building up your grammatical structure. ठीक हो गया? Okay. So talking about first of all word. जैसे मैंने पहले कहा था कि ग्रामर के दो पार्ट्स हैं. एक क्या है? मॉर्फोलॉजी और दूसरा क्या है? सेंटेंस. तो मॉर्फोलॉजी की क्या डेफिनेशन बताई थी? A scientific study of word and word formation. Scientific study of word and word formation. Word क्या है और word बनते कैसे? उसकी scientific study करेंगे वो morphology वाली. So the subject matter of morphology is word. Word is the subject matter. उस morphology में word से शुरू करना है. So in the beginning you should know in every language, no matter if it's English or Urdu or Arabic, there are two kinds of words. दो किस्म के वर्ड्स होते हैं. एक को क्या कह रहे हैं? कंटेंट, और दूसरे को क्या कह रहे हैं? फंक्शन. कंटेंट वर्ड्स UNT एंड फंक्शन वर्ड्स. हर एक जुबान में दो किस्म के वर्ड्स हैं. अभी मैं उर्दू बोलूँ या इंग्लिश बोलूँ, उसमें दो किस्म के वर्ड्स. कंटेंट वर्ड्स. अच्छा, कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड्स which contain message. The words which contain message, they are called content words. And the words which are, let's say, meaningless, they don't have their own message. They are meaningless. They are called functional. For example, a book lies on the table. A book lies on the table. This is a sentence. And if we talk about word book, lies, and table, these are those words which build up our message. Book is something, directly an image comes to your mind. When I say lies, an image of the position comes in your mind. And when I say table, again the image comes in your mind. तो आपके ज़हन में एक तस्वीर पैदा होगा किसी वर्ड को बोलने के बाद. वो जो मैसेज है वो मैसेज कंटेन करता है उस वर्ड के अंदर. तो वो वर्ड क्या होगा? कंटेंट. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से आ बुक कहूँ या आ बुक कहूँ, रहेगी तो बुक ही. सो आई इज नॉट गोइंग टू मेक इट आर बिल्डिंग अप another message in our mind. ओके, ऑन एंड द. ठीक है, ये वो वाले वर्ड्स हैं जो फंक्शन. आप ये पूछ सकते हैं कि जो कंटेंट वर्ड्स हैं वो तो मैसेज देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. तो फंक्शनल वर्ड्स मैसेज देते हैं तो क्या हुआ? इम्पोर्टेंट है? नो, एक्चुअली दे आर द मेकर, दे आर द पॉलिश ऑफ द लैंग्वेज. दे पॉलिश योर लैंग्वेज. विदाउट दीज वर्ड्स यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग. यू कैन से दे आर द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज. मैसेज इज कन्वेड बाय कंटेंट वर्ड्स. And the beauty of language is conveyed by these functional words.
Okay, now we talk about content which contain message and what is the purpose of functional word. Purpose of the functional word is to provide a function. Function means again specific, उसकी काम, एक काम है, उसकी ज़रूरत है. For example, I say अब आने क्या function है? It means any book. But when I say the article, it does not mean any. It means specific. Specific कैसे बनता है? आपने आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा कुछ के आर्टिकल जब किसी चीज को खास करते हैं तब हम आर्टिकल यूज करते हैं. तो खास करने से मुराद क्या है? खास करने से मुराद ये है कि जिसके सामने बात की जा रही हो उसके माइंड में बताओ कि किस टेबल की बात हो रही है. और आप उस वक्त हम यूज करते हैं जब तक जिसके बात की जा रही है उसके ज़हन में ना हो कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है. मैंने से आपको तो सुनने वाला ये कहेगा कोई भी बुक हो सकती है. और जब दादी लोग आए तो सुनने वाले को भी पता है. और ये स्पीकर के राइटर के माइंड में होता है कि जिसके लिए मैं लिख रहा हूँ या जिसको मैं बता रहा हूँ उसे भी पता है कि कौन सी चीज को उसे पता है और मुझे पता है. बोथ ऑफ देम have the same thing in their mind. We require article. तो खास करने से क्या बता रहे हैं? इसको थोड़ा स्पेशल बना रहे हैं. खास करने से मुराद ये होता है कि जो हमारा रिसीवर है जिसमें क्या लिसनिंग के जरिए हमारा डेटा रिसीव करना है या रीडिंग करके डेटा रिसीव करना है तो उसके माइंड में भी वही चीज आए जो प्रोड्यूसर के माइंड में है, स्पीकर के माइंड में है या राइटर के माइंड में. ठीक है, तो ये आपके डाटा फंक्शन है, अपना कोई मैसेज नहीं है. फंक्शन क्या हुआ? चीज को स्पेसिफाई करता है. टेबल तो टेबल ही है. चार टेबल ही उसके साथ होती है. टेबल के साथ कोई और चीज अभी अटैच नहीं होती. तो टेबल के साथ फ्लावर भी, हाँ फ्लावर है बजाते खुद because it contains message. ठीक है, so the word can be divided into two categories. हर एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड कंटेंट होगा या कोई वर्ड function. ठीक है? Okay. Now talk about the list of content words. तो content words कौन से होते हैं? Right. So we got noun. Noun is a content word. Naming word. I got marker. इस चीज का हमने नाम रख दिया. ठीक है? Marker. तो जैसे किसी के सामने marker बोलूँगा तो वही चीज उसके इमेज में आ जाएगी. तो वैसे bus or car, so directly same image appears in your mind, but that is the name of something. Okay, so you can say simplest definition of noun is a naming word. ऐसा word जो किसी का नाम बने उसको हम naming word कहते हैं. And that is a noun, right? Okay. डिटेल बातें पढ़ेंगे. लिस्ट की बात कर रहे हैं. नाउन की आगे ब्रांचेस की पूरी बात. We are not just talking about how many kinds of content words are there. तो नाउन की जितनी भी किस्में होंगी वो सारी की सारी content में हैं. Then we got the pronoun. Now में naming word है, इसका नाम है जिससे marker रहा. तो मैं कहता हूँ I am a marker is black. I have a marker, the marker is black, the marker is expensive. वहाँ marker क्या है ना? मार्क. उसके लिए हर एक ज़बान में उर्दू में भी है जैसे ये या वो हम यूज़ करते हैं. इस तरह इंग्लिश में भी pronoun. Pronoun का मतलब है the words which come at the place of noun. Noun की जगह पे जो words आएंगे वो भी pronoun हैं. Right. Then we have adjectives. Adjectives. There is adjective. Adjective is a quality. अगर marker है तो कैसे कहते हैं? Nice. Nice is the quality of this marker. I would say black. That's a color of this marker. Black is also a quality. So black is also adjective. So we can have adjective. Adjective is the quality word. So many words are there, adjective. Earlier, just in the beginning of the class, I used the word tantamount. Tantamount is also adjective, which means equivalent.
کہ ہم اللہ ایک جیسا چاہتا ہوں. So کوئی بھی چیز کسی کی کوئی آئیڈیا دوسرے کے ہم اللہ ہو سکتا ہے that would be tantamount and that would be equivalent equal to something. ٹھیک ہے تو وہ adjective ہے. تب میں کہتا ہوں کہ intelligent student تو intelligent کیا ہے کوالٹی ہے کس کی اسٹوڈنٹ کی انٹیلیجنٹ ایجنسی ہے. جب میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ تو وہ ایک کانسیپٹ آتا ہے ذہن میں. انٹیلیجنٹ کیا ہے کہ دو کانسیپٹ رکھے ہوئے ہیں دو میسج میں رکھے ہوئے ہیں. تو انٹیلیجنٹ یہ نہیں ہے فنکشن کی ادا کر رہا ہے بلکہ اس کا اپنے میسج جس وجہ سے اسے کانٹینٹ کی لسٹ میں لا رہے ہیں. پروناؤن کو بھی اس لیے کانٹینٹ کی لسٹ میں رکھا ہے کہ جب ہم ہی کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ میل ہے. ٹھیک ہے تو وہ کانسیپٹ ذہن ہے. Right. Then we have verb. Verb is an action word. Simplest definition. What is quality verb? The verb which determines the quality of a noun that is called adjective. Okay. Verb is an action word. ایسا ورڈ جس سے ایکشن ڈسپلے ہو جائے. run, go, sleep, walk, right? So we have action. جس کے ذریعے ایکشن ہمارے سامنے آ جائے اسے ہم ورڈ کہیں گے. Right. Next thing is adverb. Adverb کیا ہے؟ Any word which adds in the meaning of verb. یہ جو first three parts ہیں portions ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. کیونکہ آرٹیکل اس کو کہا کہتے ہیں ناؤن ہے. there is a noun which is a name. pronoun اسی ناؤن کی جگہ پہ آ گیا اور adjective اسی ناؤن کی ہوئی ہے. so these words are connected with each other. اچھا پھر verb اور adverb they are connected with each other. Right? Adverb is used for any other purpose as well. But mainly we use it for the explanation of any verb. Just اگر کہا جائے کہ he walks slowly. So we can and ask how does he walk? And your response is slowly. تو وہ کیسے کام کرتا ہے؟ میں نے say he runs fast. How does he run? اور وہ کہ fast کیا ہے؟ یہ verb ہے کہ run کی explanation کر رہا ہے. So, a verb is quality of verb. لیکن یہ اس کا ایک فیچر ہے quality of verb. This is one feature. ایسا verb جو adjective quality ہوگا اسے بھی ہم adverb کریں. Quality of verb and quality of adjective. The quality of another adverb. یہ تینوں چیزیں آپ کو ایگزامپل سے سمجھ آئی. ٹھیک ہے فار ایگزامپل ایسے ہے he is talented. He is a talented person. This is the word talented. We are using it for noun. Talented will become adjective. یہ تو clear ہو گیا. Adjective کسے کہتے ہیں؟ کسی noun کی explanation qualities کی. The word which adds in the meaning of noun, it is called adjective. Talented اس وجہ سے adjective ہے کیونکہ وہ noun کی کو بتا رہا ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا talented. So when I say he is a highly talented person, میں یہ نہیں کہوں گا he is highly talented. کون سا word یوز کر رہا ہوں؟ L-Y-Y. Just like slowly, quickly. L-Y والا word کون سے ہے؟ Adverb ہے. یہاں پہ slowly works کو explain کر رہا ہے. It is going to add in the meaning of verb. In the second sentence, highly talented کو explain کر رہا ہے. کتنا talented؟ یا پھر talented کوئی verb نہیں ہے. Talented is an adjective. تو adverb
वर्ब को भी एक्सप्लेन करता है, एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है? तो similarly if we say that extremely hot, कितना hot? hot में quality है किसी hot water है, तो extremely hot water. तो मैं नहीं कहूँगा extreme hot water. ये आपको बताने का यहाँ पे मकसद ही यही है कि जब आपने किसी नाउन की एक्सप्लेनेशन के लिए एडजेक्टिव यूज कर लिया, अब आपके दिल में है कि इसको मैं और एक्सपेंड करना, क्योंकि आपके माइंड में एक और वर्ड मौजूद है कि ये हॉट तो है लेकिन वो कितना हॉट है, आप एक्सट्रीम में यूज करेंगे, ग्रामेटिकली आप अपने आप को सेव कर लेंगे कि हॉट एक एडजेक्टिव है. इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप करना चाहते हैं एक्सट्रीम से नहीं करेंगे, किससे करेंगे? एक्सट्रीम. Why? Because adjective requires an adverb for its explanation. Adjective की जब भी आप explanation करेंगे तो इसके लिए करेंगे adverb से करना है, और adverb क्या है? ly वाले word, right? Okay. Right. अब यहाँ पे एक sentence है, he walks slowly. आपने एक sentence देखा, work is a verb, slowly is an adverb for me. ठीक है, वर्ड की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कितना स्लोली, इस स्लोली को भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं. He works extremely slowly. तो जब आपने यहाँ पे extremely वर्ड यूज करना है, extremely slowly की मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो slowly क्या है वर्ब, extremely क्या है वर्ब, तो वर्ब एक दूसरे वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर सकता है. तो ये नहीं कि वर्ब हमेशा सिर्फ वर्ब के लिए यूज होगा. एक वर्ब plays three functions. ठीक है? It adds in the meaning of verb. Action के meaning में भी इजाफा करेगा. It adds in the meaning of adjective. Adjective के meaning में इजाफा करता है. It adds in the meaning of adverb. जहाँ हमें जरूरत है हम उसको यूज करें, ताकि आपके जो राइटिंग्स है वो मैच्योर बने. तो एक फ्रेज डेवलप कैसे होती है? We have to make our writings complex by following grammatical rules. तो अपनी तरफ से लिखेंगे आप इस तरह की मिस्टेक्स. ठीक है? This is just one point. तो at the moment we are studying कि कितने सारे words, content words होते हैं. So we have noted down here 5 words. 5 words हमने note down कर लिए. One is noun, naming word. बहुत सारा definition है. कि जो word किसी भी चीज का नाम हो जाए उसे हम noun कहेंगे. कोई भी word. नेमिंग वर्ड. प्रोनाउन क्या है? ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन की जगह पे आ जाए. उसको भी बहुत सारी किस्में हैं, वो डिटेल आपने बात करनी है. पर्सनल प्रोनाउन क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है, राइट, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या है. फिर एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड व्हिच एड्स इन द मीनिंग ऑफ नाउन. ऐसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं, वही एडजेक्टिव. सिर्फ एडजेक्टिव की का एक काम है, वो सिर्फ नाउन के मीनिंग में इजाफा. और एक वर्ड के कितने काम है? 3 काम. वर्ब को भी एक्सप्लेन कर सकता है. एडजेक्टिव को हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे फिर एक वर्ड भी लाना पड़ेगा, राइट. और अगर किसी दूसरे वर्ड को एक्सप्लेन करना है फिर भी हमें एडवर्ब भी लाना है. तो अब हमारे पास ये 5 वर्ड्स हैं जिनको हम कंटेंट वर्ड्स कह रहे हैं. And what's the reason they are content? Because every word has its own message. ठीक है? ये जो sentence है, he walks slowly or he walks extremely slowly. ये चारों के चारों वर्ड्स कौन से हैं? कंटेंट है. हर एक का अपना अपना मैसेज है. इससे मुराद आपके ज़हन में कौन सा वर्ड बिल्डअप होता है? वो मेल. वर्क से क्या मुराद है? उसका काम है. एक्सट्रीमली से बताया गया उसके शिद्दत का मीनिंग पैदा किया जा रहा है. और स्लोली उसकी कंडीशन है काम करने की कैसी हालत है. तो हर एक का अपना अपना मतलब. इसमें चारों वर्ड्स कंटेंट है. लेकिन जब आप ये सेंटेंस देखते हैं, अ बुक लाइज ऑन द टेबल, इसमें चारों के चारों कंटेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि हर एक वर्ड का अपना मैसेज नहीं है. बुक कहें या अ बुक कहें, मुराद तो वही बुक है. इससे मुराद बुक के साथ कोई पेन का मार्कर नहीं है. तो इस आपकी क्या यहाँ पे हैसियत है? वो फंक्शनल. जबकि बुक क्या है? वो कंटेंट. अब फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं उनकी मैं लिस्ट आपको आपके सामने रखता हूँ. The words which do not have their own meaning, इनका काम क्या है? ये दूसरे अल्फाज के कंटेंट वर्ड्स के मीनिंग को क्लियर करें. जब मैं कहता हूँ कि बुक, इससे क्या मुराद है कि कोई
خاص بک نہیں ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں جس سے بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں بک لائز آن ٹیبل, تو جس سے میں بات کر رہا ہوں اسے میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہ والی کتاب, اسے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر کتاب پڑھی ہے وہ لے آنا. بک لائز آن ٹیبل, برنگ اٹ ٹو می. صحیح ہے, جو بھی اگر کتاب پڑھی ہے وہ میرے پاس لے آنا. تو میں اگر کنوے کرنا چاہوں آئس کی کتاب کدھر ہے, تو بندہ کہتا مجھے نہیں پتا, the book lies on the table. اب کیوں میں دعویٰ یوز کروں گا کہ بک میں اسی بک کی بات کر رہا ہوں جس بک سے پہلے ڈسکشن چل رہا ہے. اب وہاں پہ آ کے نا مطلب وہ گرامیٹیکلی رانگ ہو جائے گا. سو وی مسٹ نو وین ٹو یوز ہاؤ دا, یہ کیا ہے فنکشن ادا کر رہے ہیں, ان کا اپنا مطلب نہیں ہے, کتاب تو کتاب ہی ہے لیکن کیسے کتاب. تو آپ کیا کہیں گے, فنکشنل ورڈز کلیریفائی دا میننگ آف کانٹینٹ ورڈز. یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. فنکشنل ورڈز کیا ہیں, دے کلیریفائی, فنکشنل ورڈ کلیریفائز دا میننگ آف کانٹینٹ. اب آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, آنے آپ کے ساتھ ہی ملتے ایک میسج کو کلیریفائی کرنا ہے کہ بک کیسی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں دا ٹیبل, اس میں دانے ٹیبل کے ساتھ ملتے, دا کا اپنا آپ دا یوز کریں گے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, سو اٹ پلیز فنکشن. اچھا, فنکشن ورڈز کون سے ہیں, اس کی اب ہم لسٹ ایک تیار کر لیتے ہیں, اور اس میں ہر ایک لسٹ کو الگ سے ہم نے اس کی ساری اسٹیجز پڑھنی ہے کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے, ان کی فردر برانچز کیسے ہیں, اور وہ فریز میں کیسے ڈھلتے ہیں. رائٹ, so in functional words we have determiners, we have helping verbs, we have conjunctions, we have interjections, we have prepositions. 5 words ان کی لسٹ میں تھے, اور 5 کے words functional words میں آ گئے. You can count them: determiner, helping verbs, conjunctions, interjections, and prepositions. 5 of them are preposition. چونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے, ہمیں ہر فرق فالو ہونا ہے گرامر میں. اب یہ نہیں کہ میں اگر کنجنکشن آپ کو بول دیا اس کا مطلب کنجنکشن والا کوشچن آنا ہی ہے, اس کی ڈیفینیشن آ گئی, لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی رائٹنگ میں کہیں نہ کہیں اس کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہوگی. Maybe in writing essays or making questions somewhere. So therefore, we have to have grip over grammar completely. Right. So we have studied the list, and now we are going to talk a little bit in your mind. ये functions अदा कैसे कैसे करते हैं, ठीक है. Determine का मतलब तो बता सकते हैं, सादा वर्ड है. Determine का क्या मतलब है? बयान करना. इरादा करना, डिटरमिन, ठीक है. इरादा करना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटरमिन का मतलब होता है अज़म करना. वही इरादा करना कह सकते हैं, लेकिन एक इरादे को एक स्ट्रॉन्ग बिलीव टू डू समथिंग, ठीक है. बीइंग टारगेट ओरिएंटेड, कि आप एक टारगेट बना लिया और उसके साथ आप स्टिक हो गए, तो वो लाजमी परफॉर्म करें, ठीक है. अच्छा, डिटरमिन का मतलब तयन करना भी होता है ना, कि आप डिटरमिन कर रहे हो अपने गोल्स कि मैंने ये लाइन चूज कर ली है, ठीक है. अगर आपने प्रोफेशन चूज किया तो उसके लिए आप डिटरमिन हो गए, तो आपने अपना एक टाइटल किया, बुक को टाइटल कर दिया. लेकिन ग्रामेटिकली डिटरमिनर से क्या हो रहा है? ग्रामेटिकली हम कहते हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन को डिटरमिन करे. ऐसे अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा था बुक की भी और टेबल की भी. तो मैं कह रहा था आपको तो बुक कैसी है, कोई भी, तो ये आ ने क्या नाउन को डिटरमिन कर दिया. फिर अगर मैं कहता हूँ माई बुक, तो ज़्यादा बुक माई क्या है,
ہمارے جیسے مارکر کہنے کے ساتھ آپ کے ذہن میں امیج آتا ہے. جب میں ابھی کوئی چیز نہیں ہے اسٹار کہتا ہوں, آپ کے مائنڈ میں امیج آیا ہے اسٹار کہنے سے پورا اس کی شیپ بنتی ہے. لیکن اگر میں ایم بائی مائی کہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی امیج آتا ہے. تو یہ فنکشنل ورڈ ہے اس کی, کیونکہ اس کا اپنا میسج نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا, میسج کسی نام کو ڈٹرمن کر رہا ہے, کسی اور کو نہیں ہے نام مائی یور کہنے سے میرے لیے آپ اس میں پراپرٹی کو ڈٹرمن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سو دیر آر سو مینی ڈٹرمنرز, جس میں آرٹیکل بھی ڈٹرمنر ہے, پروسیسر بھی ڈٹرمنرز ہیں, اور ڈیمانسٹریٹر بھی ڈٹرمنرز کی ڈیٹیل ہم بات کریں گے. ابھی صرف آپ کو بتا دوں کہ ڈٹرمنر ذات خود اپنی ایک حیثیت, اپنا ایک وجود رکھتا ہے, جس کو ہم اسٹڈی کریں گے, اور اس کا نام کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. ٹھیک. ڈٹرمنر ناؤن کے لیے ہوتا ہے, جس میں ناؤن کا ملازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض ناؤن ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ڈٹرمنر آپشنل ہوتا ہے, لگا لیں ٹھیک ہے, نہیں لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض ناؤن ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ ڈٹرمنر مسئلہ. ٹھیک ہے. وہ پڑھیں گے, اس میں بتاؤں گا یہ کس قسم کا نام ہے. یہاں پہ آپ کو ڈٹرمنر یوز کرنے کی چوائس ہے. یہاں پہ اگر آپ لگاؤ گے تو غلط ہی ہوگی, اور یہاں پہ اگر آپ مس کرو گے تو غلط ہوگی. تو یہ جو فنکشنل ورڈز ہے یہ بیوٹی ان لینگویج, اسی پہ گرامر فالو کرتی ہے. باقی جو ووکیبلری جو کانٹینٹ ورڈ ہے وہ تو میننگ وائز ہمارے کو میننگ آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ان کو پالش کیسے کرنا ہے, وہاں بھی ہم مسٹیکس کرتے ہیں. یہاں پہ آل بنا تھا, دال بنا تھا, کون سا ڈٹرمنر یوز ہے. اوکے. ناؤ ہیلپنگ ورب کافی زیادہ اس سے معروف ہوں گے. ڈٹرمنر میں پہلے شاید آپ ایسے سب سے پہلی دفعہ سنا ہو, لیکن اس کی ایک کیٹیگری ہے جیسے آرٹیکل ہے, آپ کو آرٹیکل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, لیکن ڈٹرمنر کی کافی چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہیلپنگ ورب آپ جانتے ہوں گے. تو ہیلپنگ ورب کوئی بھی بولیں, ہیلپنگ ورب is are am, ٹھیک ہے. Right. Is am are. Real was were has have been will shall can. اچھا اگر میں کہتا ہوں کہ will, تو ذہن میں کوئی امیج بنتا ہے will کہنے سے. will وہ والی نہیں جس کا مطلب بس یہ ہوتا ہے. will جو verb کے لیے لگا ہے. جب میں کہتا ہوں I will run یا I will eat something, تو I will وہ تو ایک کا میننگ ہے نا, will کا اپنا کیا ہے, اس نے تو فنکشن ادا کیا. فنکشن نے ادا کیا ہے کہ verb کو فیوچر کے ساتھ اٹیچ کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ان کے اپنے فنکشن ہوں گے, وہ ہم یوز کریں گے. has taken my ticket, I have taken my ticket, he has taken his ticket. تو جب میں نے کہا I have taken, تو taken کا تو مطلب ہے, لیکن have نے کہا کہ یہ کام فنش ہو گیا, ختم ہو گیا, ابھی نہیں میں لے گا ٹکٹ دینے کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. لیکن ہیو نے کیا کیا, اس ایکشن کی ایکسپلینیشن کی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, ڈن, فنش. رائٹ. سو ہیلپنگ وربس بھی کیا ہے, یہ فنکشنل ورڈز. اپنے فنکشن ادا کریں گے کہ ہیو نے کون سا فنکشن ادا کرنا ہے, ٹو کمپلیٹ دا پروسیس آف ایکشن. ول نے کیا کرنا ہے, ٹو اسپیسیفائی دا ایکشن فار فیوچر, فیوچر کے ساتھ اسپیسیفائی کرنا ہے. رائٹ. تو یہ سارا سی آپ کو کون سا ضرور کر رہا ہوں, ان کی ڈیٹیل ہم نے پڑھنی ہے کہ برانچز کون سی ہیں ہیلپنگ وربس کی. اسی طرح اب آتے ہیں ہماری کنجنکشن. کنجنکشن ویسے جسے ہم کہتے ہیں جوائنٹ کو کہتے ہیں, جہاں پہ دو چیزیں آگے ملیں اس کو ہم کنجنکشن. جنکشن بھی کہتے ہیں, میں آپ کو بتایا یہاں پہ بڑا جنکشن ہے, اس کا مطلب وہاں پہ آگے ٹرین جمع ہوتی ہیں, تارے توڑے جاتے ہیں. تو جنکشن از اے پوائنٹ. So conjunction, junction تو meeting point ہے, اور کون سے کہتا ہے جس word نے وہ meeting point پیدا کرنا ہے نا, وہ conjunction ہوگا. جیسے I have a pen and and کیا دیا ہے, اس کو join کیا, and but nevertheless, however, اس طرح کے conjunctions ہیں. کچھ conjunctions classes کے درمیان میں یوز ہوتے ہیں, کچھ sentences کے شروع میں یوز ہوتے ہیں, وہ but conjunction means a joining word. A word which can join two words or two clauses or two phrases. Words کو ملاتا ہے یا phrases کو ملاتا ہے یا clauses کو.
Conjunction के 3 function होते हैं. It joins words or clauses or phrases. ठीक है? अभी तो word हम देख रहे हैं जब बात करें phrase develop करें phrase clause क्या होगा. इसलिए ये सारे step only. कुछ words आपके ज़हन में अभी आएंगे उनकी explanation बाद में आएगी. एक full-fledged हमारा study का program है in which we will study rest of the things systematically. अभी class के बारे में बताने शुरू करूँगा तो ये हमारी चीज़ें शुरू हैं. Okay, right. Now we will talk about introduction. Introduction किसे कहते हैं? किसी को पता है? जी. Yes, feel. The words which show our emotions. ठीक है? अब मैं कहता हूँ a loss. ये कौन सी feelings हैं? Sad feelings. ये feelings के लिए यूज करते हैं. लेकिन a loss कैसा होता है? उसकी शक्ल क्या होती है? By itself, a loss does not have any concept, but it clarifies some emotions. The emotions can be sad, or happy, or oops. Sad or something wrong has happened, you say oops. Okay, what is preposition? ये word के अंदर ही नहीं है. अगर preposition, preposition, वो word से मिला हुआ है ना? ये किसे कहते हैं? पहले, before, position, जगह. ऐसा word जो नाम से पहले आए, और उसका रिलेशन किसी और वर्ड के साथ बना है. इस वर्ड ने प्रपोजिशन में रिलेशन बनाना है एक नाउन फ्रेज का किसी दूसरे वर्ड के साथ. जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू मार्केट. आई टू मार्केट है ना. मार्केट से पहले जो टू लगा हुआ है उस टू ने क्या किया है? कनेक्शन बनाया है मार्केट और आई, दो वर्ड्स. So preposition is a word which creates a link. मिलाना मकसद है. मिलाने का कंजंक्शन का काम है. मिलाने का मतलब होता है दो चीजों को इकट्ठा कर देना. ठीक है? एक ही पर साथ ही कंजंक्शन मिला के मिलाना उस तरह है. लेकिन इसका मतलब है लिंक पैरा करना. एक कहीं और है दूसरी कहीं और है. ये मीनिंग का लिंक होता है. preposition का ये काम है. ठीक है? For example, I eat food with my family. With ये क्या है? My family का जो connection किसके साथ है? I with my family. So I show के साथ my family में है. with में उनका क्या होता है? Connection है. So you can say that preposition is a word whose position. preposition एक ऐसा word है जिसकी जगह, जिसकी placement कहाँ पे होती है? before the noun. वो क्या मतलब है? ऐसे में क्या आपको सिर्फ ये जरूरत होगी तो आइडिया समझ सकते हैं. लैंग्वेज की आप करेंगे. ठीक है? इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको जो बुक्स में नहीं है. आप जाएँ जो भी मार्केट के बुक्स मौजूद हैं पाकिस्तान में नहीं है. हाँ वो इंटरनेशनल बुक्स में मौजूद हैं ये चीज़ें. लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के हो गए जो प्रैक्टिकली उनमें ग्रामर एक वास्ट सब्जेक्ट है. रीडिंग राइटिंग सारी चीज़ें उसको कवर करते हैं. ठीक है? So now up till now any questions please? Yes. Can I guess? One. मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं चीज़ों के बारे में क्वेश्चन से वीडियो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे. The process से मैं को डिटेल में हम लेकिन टर्मिनल का मीनिंग क्लियर हो गया. टर्मिनल इज अ वर्ड which determines the noun. Noun को डिटरमिन करेगा उसकी डायरेक्शन से. एडजेक्टिव का आपको उसकी भी देना है लेकिन डिटरमिनल को एक्स्ट्रा भी नहीं है. उसने उसकी डायरेक्शन को सीधा करना. उसका मतलब ये है. Yes, yes. हाँ preposition. Literal meaning करेंगे that preposition वो तो लेकिन जो इस्लाही मतलब इसे कहते हैं grammatical meaning
a word which is used before noun phrase, a word which is used before a noun phrase and creates its link with another or phrase. इसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से वो बनाए. And here I just clarified that कि preposition को conjunction से grammatically इस तरह नहीं करना. Conjunction का काम होता है bring together, चीजों को इकट्ठा करना position में place में. इसका मकसद इकट्ठा करना नहीं होता, लिंक बनाना है. वो एक जो नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं जिसके साथ किसी दूसरे वर्ड के साथ लिंक बनाना है, वो कहीं और भी प्लेस है. कंजंक्शन में हो, जहाँ मर्जी हो, उसके दरमियान बहुत सारे वर्ड्स आ जाए. ये कंजंक्शन नहीं है, ठीक है. प्रेपोजिशन लिंक कैसा लगता है? लिंक है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम का जो लिंक है वो सोर्स बताना होता है, ठीक है. टू का जो लिंक है वो कैसा है? डायरेक्शन बताना है. इन का लिंक क्या है? इनसाइड चीज बतानी है उसका. तो हर एक प्रेपोजिशन का जो लिंक का फंक्शन है वो बड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है. अच्छा, अब एक होती है फ्रेजल वर्ब. एक होती है फ्रेजल वर्ब. जैसे मैं कहता हूँ कि bring up है, most of us example है. या break into है, break into ले लेते हैं. मैं दो सेंटेंस में लिखता हूँ. I live in Seattle. इसमें in use हुआ है, ठीक है. He broke in the recession. The in use हुआ है. ये जो है ना I live in Seattle, ये in जो है एक preposition, ये I in Seattle. I का Seattle का in के जरिए एक रिलेशन बनाया, लिंक का रिलेशन. ये जो in है ये preposition नहीं है, ये इसका हिस्सा है breaking. तो आपको जितनी भी prepositions एक तो उनका मकसद है preposition, क्या? Creating a relation or link between noun phrase and another word. ये सारे words verb particle भी हो सकते हैं. Particle कहते हैं हिस्सा. verb का particle means verb का हिस्सा. ब्रेक का मतलब तोड़ना है, लेकिन ब्रेकिंग का मतलब होता है मुदाखलत करना, बात करना, मतलब बात काटना सादा सा. इनने क्या किया है? वर्ब के मीनिंग को चेंज कर दिया. जब इन वर्ब का मीनिंग चेंज करेगा तो वो प्रेपोजिशन नहीं होती. सेम वर्ड है, ये भी नहीं. किसी भी वर्ड को हम फाइनल नहीं देंगे. We'll take the word how it is used. For example, I have a book. This is new. ये this क्या है? ये book की जगह पे है. pronoun बन गया ना. लेकिन अगर मैं कहता हूँ I have a book, this book is new. This is new और this book is new, दोनों सेंटेंस ठीक है. लेकिन जब मैं कहता हूँ this book is new तो उसका फंक्शन नाउन की जगह पे तो नहीं बना, उसके साथ आता है. यस एक अच्छा, एक तो रब्त पैदा करते हैं लेकिन उनका आपस में मीनिंग का लिंक नहीं होता, सिर्फ जगह का निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड हैज अ कंप्यूटर एंड आई हैव अ लैपटॉप.
وہ الگ ہے جو الگ صفت پہ لایا ہے. اینڈ میں کسی ناؤن کا لنک ادھر پیدا نہیں ہے. لنک میننگ کا ہوتا ہے, ریلیشن کا. ٹھیک ہے, دوبارہ دیکھیں, فزیکلی دو ورڈز, دو فریزز یا دو کلاسز کو اکٹھے کرنا, پلیسمنٹ کرنا, اس کو ہم کنونشن کہتے ہیں. اور اس کا مطلب نہیں یہ نہیں ہے کہ جو پہلے یا بعد میں آئی ہیں جو دو ورڈز یا کلاسز یا فریزز ان کا آپس میں میننگ اور ریلیشن ہے. لیکن پریپوزیشن میں میننگ کا ریلیشن ہے کہ آئی ان سے آتا ہے, آئی ورڈ سے آپ کا میننگ کا ریلیشن. ٹھیک ہے, رائٹ, ہوپفلی کلیئر. لیکن جب وہ ڈیٹیل آئے گی نا, یہ بھی صرف ناموں میں دیکھیں ورڈز کی کس میں کتنی, جیسی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ناؤن کی برانچز پڑھیں گے اور ناؤن کی فریز کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے, بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے. اسی پہ وہ آپ کی کیا ہی بات ہوگی, کیونکہ 80% سینٹینسز کے اندر ناؤن فریز یوز ہوتا ہے. ناؤن فریز کو ڈیفائن کریں, ہو سکتا ہے دو لیکچرز. اوکے, دیٹس آل.